So no plans are open. I didn't really like the closing of this candle. The lower end of it was around 8500 and the upper end was almost around 18600, which is what I didn't really like. So I didn't really trade. What will I do tomorrow? If you're watching my post market yesterday also, I wanted this to come at 420. So let's see. I like the closing of both Bank Nifty and Nifty, but 420 from here is not really a big task. So I wouldn't really want to trade that. If candle closes around 500 levels, then I'll probably look for a trade. But if something happens below this level, then no. I need a good risk reward trade. So totally depends. We'll skip morning trade. Did not trade Bank Nifty. Nifty did not trade. System trade triggered and gave you almost 40-50 points on an expiry day, which was good. Shared on social media channels, mostly all social channels, around 12:30ish. Trade was sell below 12. Target stop loss 12 high. Target trail my stop loss. So I think even the last candle was making a new low. I didn't really wait till this, considering and this is an expiry trade. But a good Hero Zero was a very good trade here. I sold options. As I mentioned, I will look for a good RR trade. For me, right now in Nifty, 18470 is a good support. So if that breaks, then I'll look for more shorting opportunities. But we still have 100 points to reach there. So let's see what happens tomorrow. Thank you. सुबह मैंने ट्रेड नहीं किया, जैसे मैंने बोला था. मैं देखूंगा कैसे क्लोज होता है. मेरे को अच्छी लगी नहीं क्लोजिंग. लो इसका 500 के आसपास है. 500 क्या है, गैप फिल का लेवल है, और हाई इसका 600 के आसपास है, जो कि मेरा रेजिस्टेंस है. तो इसीलिए बहुत बड़ा कैंडल है ये, इसलिए मुझे नहीं लेना था वो रिस्क. और अगर आप देखें तो अगले 4 कैंडल ने इनसाइड बार बनाया. बेसिकली निफ्टी 2 बजे तक मोस्टली इनसाइड बार पे थी कल के कैंडल के. तो पर पूरा गेम चेंज हुआ यहाँ पर, स्पेशली बैंक निफ्टी में. अगर आप लॉन्ग है तो मैंने नहीं ट्रेड किया बैंक निफ्टी पे ट्रेड नहीं किया, वॉल्यूम्स नहीं थे. निफ्टी शॉर्ट दिया था मैंने 12 नीचे, सेल स्टॉप लॉस वाला है. ये अच्छा ट्रेड था. लास्ट कैंडल ने भी लो बनाया. तो बेसिकली आपको यहाँ मिले हैं 45 पॉइंट्स कुछ, और स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का. तो 1:1 हो गया. लेकिन यहाँ तो एक्सपायरी थी, तो आप आराम से हीरो ज़ीरो कर सकते थे. मैंने तो ऑप्शन बेचे थे. कल जैसे मैंने बोला, वेट करूँगा मैं क्लोजिंग की. मेरा पहला टारगेट है 420. इसमें पहला टारगेट है 470 या 480. 470 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होती है तो अच्छा शॉर्ट बन सकता है 400 ब्रेक के लिए, और पोजिशनल शॉर्ट भी शायद ट्रिगर हो सकता है. देखते हैं कैसे बिहेव कर रहा है. स्पेशली आज का कैंडल देख के मैं कल का 1 आवर कैंडल का वेट करूँगा, फिर देखूँगा. थैंक यू.